नमस्कार। आज 29 मई 2022 और आज के इस डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप एनवायरनमेंट जो हमारी संडे को एवरी संडे 12 से 1 बजे होती है और एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज के, पोल्यूशन कंट्रोल के हम डिफरेंट टॉपिक्स लेते हैं। तो आज का टॉपिक, इसमें हमने जो एक रिसेंट रिपोर्ट आई हुई है, द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ, जो अभी मई में रिलीज हुई, उस पे सब्जेक्ट पे डिस्कशन पे हमने राउंड टेबल रखी है। जो हमारे थिंक टैंक के लोग हैं, जो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप के लोग हैं, वो आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी यूट्यूब और फेसबुक पेज DRK अग्रवाल के पेज पे जुड़ रहे हैं, उन सबका और एक्सपर्ट ग्रुप का स्वागत करते हुए हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं कुछ बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद हमारे जो और लोग हैं साथ में जो हैं वो डिस्कस करेंगे। दिस रिपोर्ट, जो लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ, इट वाज बेसिकली रिलीज्ड ऑन रिसेंटली 17 मई 2022 को। ये 2022 की जो रिपोर्ट है। सो दिस, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, pollution remains responsible for approximately 9 million deaths per year, corresponding to 1 in 6 deaths worldwide. These are data they have collected from the Global Burden of Disease, Injury, Risk Factor Study, etc. और दो इनके अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंक्रीज डेथ्स they are attributable to ambient air pollution and toxic chemical pollution. जो मैक्सिमम जो है दैट वाज जो पोल्यूशन में भी the ambient air pollution and toxic chemical pollution, this were. Death from these pollution risk factors are unintended consequences of industrialization and urbanization. Industrialization में बहुत से कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दो पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस आर देयर, बट जो उनका चाहे एमिशंस है या उनका जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, मोस्टली हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बहुत लोग हैं जानते हैं कि इट शुड बी विद इन द स्टैंडर्ड, जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड है। बट जो मोस्टली जो है ये पाया जाता है कि जिस पर रिलीज आइदर अनट्रीटेड और जो पार्शली ट्रीटेड होता है, दैट वाज, चाहे वो डोमेस्टिक एफ्लुएंट हो फ्रॉम सिटीज से, अर्बनाइजेशन का रिजल्ट हो, या इंडस्ट्रीज में हो, अनटिल अनलेस प्रॉपर जो ऑनलाइन अब मॉनिटरिंग वगैरह सर्विसेज हो रही हैं, एफ्लुएंट मॉनिटरिंग जो सर्विसेज हैं, या इमिशन मॉनिटरिंग, इमिशन जो मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं, इस तरह की जो है पोल्यूशन बोर्ड का, बिकॉज ऑफ दैट मॉनिटरिंग बढ़ने से थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। अदरवाइज दीज आर द डिस्चार्ज नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, तो रिजल्ट इन दी जो हायर पोल्यूशन इन दी, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द लो इनकम एंड द middle income countries. Despite ongoing efforts by various national and state governments, UN agencies, committed groups, NGOs, committed individuals, there is little real progress against pollution is achieved. दो सभी एफर्ट्स कर रहे हैं हम लोग भी, जैसे कि चाहे गवर्नमेंट में रहे हो या हम लोग सब लोग ग्रुप हैं या NGOs जुड़े हैं, लोग हैं, एक्सपर्ट ग्रुप हैं, सभी लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। बट जो एक्चुअल में तो वेरी जो है इसकी सक्सेस इज अचीव्ड एक्चुअली। कहीं पे भी अगर कंट्रोल पोल्यूशन का हुआ है, सपोज आप PM 2.5 लेवल अगर 90 है तो 90 से 85 आ गया, 80 आ गया, दिस इज नॉट द एक्चुअली द सक्सेस की जो स्टैंडर्ड हैं वो भी हम वी नॉट एबल टू मीट दैट एक्चुअली। In the low income and middle income groups countries, pollution is the most severe actually. That was we have observed, particularly in Southeast Asia, जो हमारे countries हैं. This report says urgent attention is needed to control pollution and prevent pollution related disease with an emphasis on air pollution and lead poisoning. Lead poisoning का भी focus किया है, and a stronger focus on the air pollution particularly. And these are the because pollution, climate change and biodiversity losses are very closely linked with each other. That is. Successful control of these threats require a globally supported formal science policy interface to inform intervention, influence research and the guide funding. Because बहुत सा हमने इंडिया में ऑब्जर्व किया
बहुत सी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको प्रॉपर फंड नहीं है कि इवन जो प्रॉपर जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दे आर प्रोवाइडिंग फंडिंग्स, दे आर नॉट सफिशिएंट। जो पर्टिकुलरली अब तो मॉनिटरिंग के लिए बहुत से सिटीज में जो कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग सेशंस है, सीपीसीबी भी और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सब लगा रहे हैं, बट इवन देन मॉनिटरिंग का भी प्रोग्राम जब इंडिया में ये हाल है तो अदर कंट्रीज आप समझ सकते हैं, बांग्लादेश है या और श्रीलंका है एंड अदर इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनमें क्या हाल होगा और किस तरह से जब मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है तो कंट्रोल तो डेफिनेटली बहुत इस तरह से कम होगा। तो फंडिंग इज द मेजर इशू पर्टिकुलरली फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। रिपोर्ट सेज पोल्यूशन हैज टिपिकली बीन व्यूड एज ए लोकल इशू। हम लोग यही करते हैं कि हर अपना जो स्टेट में या अपने सिटीज में या अपनी एरिया में दैट वाज लोकल इशू टू बी एड्रेस थ्रू सब नेशनल और नेशनल रेगुलेशंस हमारे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एड्रेस करते हैं और अकेजनली यूजिंग रीजनल पॉलिसी इन हायर इनकम कंट्री। अब हमने रिसेंटली ये भी एक जैसे दिल्ली एनसीआर में एक एयर सेड अप्रोच लेके चले हैं, अदरवाइज तो हम दिल्ली में हम अलग अपना करते थे और एनसीआर स्टेट से अलग करते थे और कंबाइंड इवन एफर्ट्स नहीं थे, बिकॉज दिस इज नॉट द वेरी लोकल इशू कि आप एक दिल्ली का है अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना तो आप केवल दिल्ली में एक्शन लेंगे और बाकी जगह नहीं लेंगे तो कंट्रोल। इस समय जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी है उसने या पहले इप्का था उन सब ने और इवन सर तो पार्थो त्यागी सर तो सीपीसीबी में रहे हैं, कितना मतलब ऑल स्टेट्स में कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत रही है और अब फोकस एयर सेड अप्रोच पे ही ज्यादा है, चाहे वो लोकल जो है इंटरकनेक्टेड स्टेट्स हो या इंटरकनेक्टेड नाउ कंट्रीज आल्सो एयर सेड अप्रोच इज रिक्वायर्ड। लाइक जैसे हायर पीएम अभी जो टोटली जो पर्टिकुलरली जो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में दिस इज द सेम रीजन मींस इंटायर आपको रीजन की जरूरत है टू हैव सेम अप्रोच दैट way. So now it is clear that pollution is a planetary threat and its drivers, its dispersion and its effects on health transcend local boundaries and demand a global response. जैसे अभी डस्ट की बात की दिल्ली एनसीआर में तो बहुत से ओकेजन्स में देखा गया कि डस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान एंड डस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, क्योंकि वो विंड डायरेक्शंस हैं इस तरह से हैं तो फ्रॉम द अदर कंट्रीज आल्सो द फाइन डस्ट जो है इज कमिंग फ्रॉम दैट। So global action on all major modern pollutants is needed, and global efforts can synergize with other global environmental policy programs like rapid transition away from the all fossil fuels to clean renewable energy based solutions. So India is already doing a lot of things in renewable energy, particularly the International Solar Alliance and other programs, and more focus to rooftop solar energy programs and other solar energy programs. और बड़े बड़े बिग प्लांट ऑन दी गीगावाट स्केल दैट वाज दी इन दी एंड का टारगेट जो 500 गीगावाट बाय 2030 इज आल्सो मेजर इन दी आफ्टर द COP26. सो मैसिव नेटिव ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड दी आर सिमिलर प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड. Therefore, international organization and national government need to continue expanding the focus on pollution is one of the most important global environmental issue along with the climate change and biodiversity. There are some that key finding of the reports, some background of the reports. I just wanted to just give a background. So now the floor is open for discussion. So again, with request our guru, our mentor, Sri Partho Tyagi sir, then we'll start with the others. मैं ज़्यादा तो वैसे लैंसेट की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि आप और भी कुछ डिटेल देंगे सिवाय मॉर्टेलिटी के। पर जो जनरल बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे खामियां नज़र आती हैं इन हाइंडसाइट, एक तो पोल्यूशन कंट्रोल को समझ लिया है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज लार्जली पोल्यूशन कंट्रोल। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल डज नॉट इवन टेक केयर ऑफ प्रिवेंशन, डज नॉट टेक केयर ऑफ अबेटमेंट, एंड अबेटमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु विल लाइक टू सेव मनी एंड चीट इफ पॉसिबल. दूसरा, विद द पुअर अरेंजमेंट वी हैव on monitoring,
और फिर मॉनिटरिंग का इंफॉर्मेशन आने में और उनके ऊपर एक्शन लेने में और मुकदमा दायर करने में और फिर उस मुकदमा का चलता रहने में, ये इतनी स्लो प्रोसेस है कि देयर आर पार्टीज विच फाइंड इट चीपर to continue to pollute and fight a case in the court and finally admit in the court, okay sir, within 1 year we will do this, and the court gracefully grants them 1 year. So that kind of thing has actually come in the way of environmental management, and the problem is that having created the pollution control boards, it has been considered that they are meant only for control, and gradually people from administration and law enforcement, they have taken over as chairman and member secretaries of most of the pollution control boards, and therefore the efficiency or efficacy of pollution control boards is now comparable with the efficiency and efficacy of police department. This is my very, I would say, a comment which may not be pleasant, but this is where we are driving towards by replacing scientists and engineers from key positions and concentrating on control rather than prevention and abatement. A reform which is overdue is to consider that environmental management is more important than pollution control, because pollution control can be subject to corruption, and pollution control is inefficient because of poor monitoring arrangements. Secondly, if you monitor ambient, you cannot find out who is at fault, because allocation of responsibilities in a ambient sample is extremely difficult. You see any study, you will find that even broad allocation of what is air pollution due to, whether it is due to traffic or due to parali or due to construction or due to meteorological factors, you will find such variance in the reports that it is very difficult to say which results you would like to adopt. So I think if we have to move forward, we have to move forward in the direction of environmental management. Now, we have any number of institutions in business management, but we have hardly any comparable institutions for environmental management. Even if you compare within environmental Ministry of Environment and Forest, there are very good institutions and a large number of institutions on forests and research on forests and management of forests compared to the institutions we have for research in environment and management of environment. So we have to really focus both on the institutional aspects and aspects which are other than control. That means the legal aspects of management of environment. So this is the best that I can offer at the moment, sir. Allowing time to others. Sir. Thank you, sir. So now I'll request Dr. Dwarkanath ji, who has experience in the 2 UT, Delhi and the Pondicherry, and the about 25 years he was in this field. So I request Dr. Dwarkanath. Sir, आपका म्यूट है. Good afternoon to everyone. Sorry, and this is a latest report on health and environment and climate change. See, the study needs very in-depth analysis. I have gone through some of the papers that has come, but they try to analyze regional-wise, continent-wise, rather the report and the impact, and they are trying to interrelate various SDGs along with the climate change. It is a very complicated study and report,
it reads in-depth analysis regarding this. But one thing is there are certain clear facts that emerge. Yes, pollution is directly related to the health. That is, nobody can deny, especially the air pollution that is related to the health, and also the water pollution that is related to the health of the individual, and especially the lowermost strata of the economics, that is working class population. Their man days and their daily etc. are affected, and the cost of the treatment also goes up, whether it is individually borne by the individuals or by the national level, state government or central government authorities. But it is a very worrisome thing. It needs a lot of attention. Whether the debate should not be on the lines of whether we are going to increase 1.5 degree by 2030 or 2 degree by 2050. The issue is we have a problem at hand, and it is serious. It needs to be addressed. How the entire world globally we fought against the pandemic. Like this, we have to join together, unite together, and then understand and commit ourselves with the utmost sincerity with the cross-funding internationally by various organizations, not only putting the burden of the cost of mitigation and adaptation to the lower, that is developing world. We have to ensure the finances for the changeover to the control of mitigation and adaptation also need to be looked at. But at the same time, whatever individually as a government we should do, we also should address. For example, India pioneered the International Solar Alliance, and then there were more than 143 countries have partnered along with India, and then we have championed in the production as well as subsidizing the rate as well as the cost of production of solar energy. Like this, without any international funding. Only what our Prime Minister used to say, the scale, skill, and the speed of the production has ensured that the cost of production has come down considerably. So this has to be kept in mind. So all the identified actions, whichever possible, without much of the individual nations financing, those need to be prioritized, and those actions has to be spearheaded without any delay. So these are my opening remarks, and thank you for the opportunity. Thank you, sir. Dwarkanath sir. Thanks for your views. So now I request Pradeep Khandelwal ji, though he was the municipal corporation, he is a direct and on ground, and he experienced the issues with the municipality, particularly in the waste management, because one of the cause of the pollution is the improper waste management from the from the landfills or from the dumping of the waste in the from Dhalau and onwards. So these are very important, particularly municipal point of view. Say, unke paas there is funding issue, there are other issues. So I'll request Sri Khandelwal ji for his views. That good afternoon to all. सबको नमस्कार. मैंने हालांकि रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है, बट मैं सोच रहा था कि ऐसी रिपोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है. ये अब बिल्कुल ठीक है कि पोल्यूशन की वजह से हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये पोल्यूशन क्रिएट ही क्यों होता है. आज से 25 साल पहले या 50 साल पहले लोग पोल्यूशन का नाम ही नहीं जानते थे. लोग घर में रहते थे, खाना भी खराब होता था, सड़ता भी था, फिर भी इतना पोल्यूशन नहीं होता था. तो जो सबसे मेन रीजन पोल्यूशन का है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट तो सेकंड स्टेज है. फर्स्ट स्टेज है व्हाई वी क्रिएट द पोल्यूशन. तो पोल्यूशन क्रिएट और उससे इम्पैक्ट क्या है, ये जो नॉलेज है वो बहुत कम है अभी. चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट लेवल पे हो, सबको पता है कि पोल्यूशन है, इसके मेजर्स ये हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते हैं.
क्यों नहीं करते हैं, इस पे हमको ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए। क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। अभी त्यागी जी ने बिल्कुल साफ बताया कि मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, ये सब चीजें तो सेकेंडरी हैं। जब तक ये पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है उसको अबेटमेंट कैसे होगा, उसका रोकने के तरीके हालांकि मालूम होने के बावजूद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल्स को पता है कूड़ा सड़क पे फेंकने से गंदगी होती है, एयर पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन करने से एयर पोल्यूशन होता है। लैंडफिल्स पे कूड़ा जमा होने से एयर पोल्यूशन होता है, या लीचेट से वाटर पोल्यूशन होता है। लेकिन क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, इस पे अगर हम लोग जरा डिस्कशन करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। आज हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करें कि ये रिपोर्ट में जिसकी वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो चीजें इनिशियली उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज बहुत जरूरी है देश के लिए, लेकिन उस देश को, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आपको बताना चाहूंगा। मैं एक कमेटी का मेंबर भी था कि जो फॉरेन कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन होती है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो वुड वर्क हो, चाहे वो ब्रिक वर्क हो, चाहे वो और कोई वर्क हो, जिससे वेस्टेज भी कम होगी और इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होगा। तो इस तरीके की हमको खोज करनी पड़ेगी इंडिया में कि जिस तरीके से, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो गार्बेज मैनेजमेंट में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, सब में, कि जो चीजें पोल्यूशन कर रही हैं उनको कैसे कम किया जाए। लाइक इंसिनरेशन इज कंपल्सरी फॉर मेनी इंडस्ट्रीज, तो इंसिनरेशन को कैसे मतलब गैस बन जाएगी, गैस क्लीनिंग सिस्टम हम लगा देंगे, वो इतना कॉस्टली है और इतना उसका ओएनएम है कि आदमी, त्यागी जी ने जैसे कहा कि वो करना ही नहीं चाहता, वो पैसे बचाना चाहता है। इतने बड़े बड़े हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली में लगा दिए, रेगुलर मॉनिटरिंग भी हो रही है, उसके बावजूद उसमें एयर पोल्यूशन हो रहा है। बैक फिल्टर्स इतने कॉस्टली हैं, कार्बन डोज कॉस्टली है, कार्बन एंड लाइम डोज जो हम देते हैं। तो इन चीजों को हमको पहले देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पोल्यूशन जो एट सोर्स ही खत्म किया जाए। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट। थैंक यू। थैंक यू खंडेलवाल जी। फॉर गोइंग टू नीरज जी, मैं चाहूंगा विवेक जी से आज भी बीच में मैं करूंगा विवेक जी को। विवेक जी इंडस्ट्री साइड से भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट में, HCFI में भी बहुत एक्टिवली ट्रस्टी भी हैं और एनवायरनमेंट का काफ़ी इनको फोकस भी है और सो मेनी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, और अदर इंडस्ट्री साइड में भी बहुत से पोल्यूशन कंट्रोल एंड अदर इश्यूज पे फोकस कर रहे हैं अपनी इनकी। सो मैं विवेक जी से उनके व्यूज आज के सब्जेक्ट पे, दो ग्लोबली डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड कि आपका इंटर स्टेट और इंटर कंट्री अप्रोच इज रिक्वायर्ड, बट डेफिनेटली जो लोकल आपका पोल्यूशन कंट्रोल इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिसाइड्स द इंटरनेशनल जो आपका जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। विवेक जी। Namaskar to everyone. Not that I would like to blow a trumpet or talk as bragging about our organization, but definitely I would like to begin by saying कि global warming और ये जो pollution है, and because of pollution जो health का है, it is a very serious issue. And just because we are running behind wealth, people are not really understanding the depth and the severity of the problem. And the thing is, it is affecting all of us. We as an organization, I will tell you, we are into multiple business. So to begin with, like we are in the textile business. So we as an organization have taken a stand that we are only doing sustainable clothing. उसका मतलब क्या है कि we do recycle polyester. We are doing organic cotton only, because organic cotton में क्या है कि आप you don't use pesticides while spraying on the cotton while the cotton is growing. And ये जो अपना हम लोग जो cotton use करते हैं इसके लिए, this goes, the raw cotton goes to Switzerland for testing, because there is only one laboratory in the world which can give you an authentic report कि, because जैसे organic फल भी हम लोग market से लाते हैं, we really don't know.
if it is organic or not, and the people charge us more. Yeah. So we are doing these things, and we are the only company who's certified in India under GOTS and Blue Dot labels, that we are zero polluting company in apparel and textile. One of the only companies in India who has got this certification. And our purpose is that I think that consumers have to support such industries. I feel ki who are doing sustainable clothing, it is not that it is more expensive. Jada 5-10% ka difference aayega. Secondly, there is too much of consumerism nowadays, where even young boys, young children are buying clothes and they wear it 3, 4 times, 5 times, and then they throw it away. हम लोग के जब when we were growing up, दिवाली पे कपड़े पहनते थे और हम लोग उस कपड़ों को साल भर चलाते थे. अब आजकल वो खत्म हो गया है. Nowadays people are not wearing clothes more than 4 to 5 days. अब ये सब clothing कहाँ जाएगी? They are all going to go into landfill. Fashion, staying up to fashion, and these things have become very, very. अब जैसे we make clothing for a company which is called Patagonia in US. Patagonia puts a label on the clothing. Please buy the clothes only if you really need. तो ये सब चीजें जो हैं ये बड़ी जरूरी है लोगों को समझना कि just because you have money, you cannot just go and spend, because when you spend that money, the money you spend is going to create pollution somewhere. Same is happening across all industries. Jaise we are in the hospitality industry also, all our hotels, we are trying to make it completely sustainable. Regardless, देखिए pollution, I fully agree with Paritosh ji what he said कि pollution board cannot be held accountable and responsible for everything. It is the industrialists who have to first come forward कि they mean well. अब I've been born and brought up in Varanasi. I learned how to swim in 1970s in गंगा जी. हम लोग गंगा जी में जाके नहाते थे. आजकल तो उंगली भी गंगा जी में डालने में डर लगता है. ये it's a very unfortunate situation, but बनारस में the pollution level in the river is so high. और हम लोग उस समय सीधे गंगा जी का पानी पीते थे 70s में और उसी में स्विमिंग करते थे. तो माने इतना फर्क आ गया है. And there is a stench in the water. When you are in the river, you can smell कि there is a pollution. It is very unfortunate, but right from Gangotri down to Ganga Sagar, we have to ensure that no untreated water or any kind of contamination takes place into Gangaji. Besides, of course, we have the cremations which we do. And जो cremation की भी चीजें जो गंगा जी में जाती हैं, they are very organic. There is nothing which actually, cremation is not polluting the river. It may be polluting the air, but it doesn't pollute the river because it is organic, and there's a lot of scientific study behind it. तो मेरा तो यही कहना है कि I think businessmen, consumers, all of them have a very vital role to play if we want to control the pollution. And then consumerism is leading to a lot of other things also, like antibiotics, hormonal injections being given to animals to give more milk or chickens to grow faster. तो ये सब की भी जो pollution है, ये सब भी lands में जा रही हैं, ground water में जा रही हैं, rivers में जा रही हैं, जिसकी वजह से आजकल देखिए ladies को PCOD और इस तरीके के hormonal imbalance problems कितनी हो रही हैं, which is leading them to take a lot of hormonal medicines. So this is all our own creation. These kind of course, there were diseases in the past, but I would say that we are more disease prone today than we were in the past. Yes, our lives may have gone up. Average life may have gone up because of antibiotics, etc. But people are suffering more. And people are living with diseases more than they did in the past. So this is my suggestion. My suggestion is, yes, we are as an organization planting a lot of trees. We would love to show you on 300 acres in Bangalore, we planted trees, and how we have changed that entire area near the airport. We have so many more birds, we have so many more animals there.
उसकी वजह से the temperature has come down in that area, and we are attracting clouds which is leading to more rains in a dry area where there was very little rain. यही चीज Mr. Mayank Gandhi ने किया है, where there was which was the suicide capital in Maharashtra, and वहां पे उन्होंने उसको चेंज करके वहां पे इतने फल के पेड़ लगाए हैं कि उसकी वजह से वहां का इतना एनवायरनमेंट बदल गया। और हमारी मिस्टर मयंक गांधी से बात भी हो रही थी, because he is a great inspiration, I find, कि the farmers' level of income has gone up. They have started respecting the environment more, and they are seeing the advantage. If you respect the nature, how nature gives back to you, you know, and how to live with the nature. Most important is that we who have become urbanized, we have forgotten how to live with the nature and respect the nature. Thank you. थैंक यू सर विवेक जी। आपके बहुत अच्छे व्यूज आपने जो बताए अपना, और आप जिस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं। बट मेरा जो अभी इन जनरल जो है, करीब अबाउट 20 years आई वाज इन एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल फील्ड, और जो हमने ऑब्जर्व किया और फील्ड में भी गए, मोस्टली अबाउट 90% जो इंडस्ट्री पीपल और जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, दे थिंक जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स दे आर बर्डन ऑन देम, जो उनकी जो प्रॉफिट है उसमें उनको लिए बर्डन है। दैट वाज दी यस या। तो ये बहुत बड़ी सर बहुत बड़ा मोटिवेशन की जरूरत है इंडस्ट्री लोगों को कि सबसे पहले यू आर द मोर इफेक्टेड पर्सन फर्स्ट, जो है आपके वर्कर्स हैं या आप हैं, वो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पैक्ट हो, चाहे एयर पोल्यूशन का हो या वाटर पोल्यूशन को या नॉइज का, पहले इम्पैक्ट आपके लोग हैं जो वहां पे वर्क कर रहे हैं उन पे ज्यादा है। आप वहां बैठे हुए हैं, आप पहले वो धुआं तो पहले आप ही इनहेल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई और इनहेल करता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा 90% मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि वो ये समझते हैं कि जो भी ये पोल्यूशन कंट्रोल वाले लोग आ रहे हैं या बता रहे हैं, ये हमारे लिए जो हमारा प्रॉफिट है उसमें एक्स्ट्रा बर्डन हमारे लिए, और हमारा वो प्रॉफिट कम हो जा रहा है क्योंकि हमें एसटीपी चलाना है या और स्कबर करना है या और कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को चलाना है, उसकी पावर कॉस्ट है, उसमें जो केमिकल्स हैं दे आर बर्डन ऑन। ये माइंडसेट की बहुत चेंज की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा, लोग ये नहीं समझेंगे कि पहले इम्पैक्ट हमारी फैमिली हमारे ऊपर है, और हमारे जो क्लोज वर्कर जो हमारे लिए रोजी रोटी है उनका इम्पैक्ट, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट है। ये बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है। आई थिंक ये हमें मोटिवेशन की जरूरत है कि इंडस्ट्री लोगों को ये, क्योंकि ये वन ऑफ दी जो मेजर सोर्स जो इंडस्ट्री में है यही है। जैसे हम आपको बताते हैं, तो वी आर सेटिंग अप अ न्यू फैक्ट्री। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज हाउ टू मेक द लीस्ट कार्बन फुटप्रिंट व्हेन वी आर सेटिंग अप द न्यू फैक्ट्री। तो जो रूफ है, रूफ शुड बी मेड विद सोलर so that we are able to get power from there. How the water is going to be reused to 95% is the second thing. Even though there will be toilet water, there may be effluent water, but 95% of the water must be reused. These are certain things I think lot of conscious businessmen are started doing it now, because they understand. If you ask me, I was also not very fully aware of this subject in the 90s. I must have been also a culprit to this, but from 2000s we have started slowly changing, and I feel very proud about our organization today, that we are, and my entire team is very environmentally conscious, and everything first starts कि भाई इसको करने से हम लोग environmental impact क्या होगा और उसको हम कैसे नलीफाई करते हैं, फिर उसको सोचते हुए हम लोग आगे काम करते हैं। और अभी सर स्टडी जो कि जो पुअर हैं, पुअर भी, और पर्टिकुलरली जो पोल्यूशन कम करते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली की स्टडी है, आईआईटी रुड़की ने अभी रिसेंटली की है, और उसमें ये इम्पैक्ट आया कि जो लोग पैदल चलते हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, या इस तरह जो पोल्यूशन को मतलब बिल्कुल नॉन मोटराइज भी यूज करते हैं, चाहे साइकिल वाले, वो उन पे ही ज्यादा पोल्यूशन का इम्पैक्ट है। बिकॉज वो तो कोशिश कर रहे हैं कि नॉन मोटराइज पे जा रहे हैं, चाहे साइकिल चला रहे हो या पैदल चल रहे हो, बिकॉज डायरेक्ट जो एम्बिएंट में जो पोल्यूशन है वो, बिकॉज उनको लॉन्ग टाइम वो इस तरह के एक्सपोजर में है, तो दे आर द मोर इफेक्टिव। तो आई थिंक उनका ज्यादा हेल्थ पर इम्पैक्ट ज्यादा है। तो आई थिंक हमें इस तरह के मोटिवेशनल की जरूरत है, चाहे वो सोर्स जो भी पोल्यूशन कर रहा हो, जो जनरेटर है उसके लिए इस तरह के जो है कि उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए और क्या। So I think he will continue. So I'll request Neeraj Tyagi ji for his views on this report particularly.
जी नमस्कार। सबसे पहले परितोष सर को नमस्कार और विवेक कुमार जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी को नमन और सभी जो प्रबुद्ध विद्वान एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी प्रणाम। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। जैसे खंडेलवाल साहब कह रहे थे कि इस तरह की रिपोर्ट क्यों आती है, आईपीसीसी की जरूरत क्यों पड़ती है। मेरे ख्याल से तो ये रिपोर्ट्स आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फोकस एरिया हमारा होता है। सभी ब्यूरोक्रेट्स भी पढ़ते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी इंटरनेशनल पढ़ते हैं, तो कुछ जब हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ इस दिशा में बेहतरी भी होती है। तो ये कुछ ना कुछ मंत्र तो मिलता ही है इन रिपोर्ट से। तो ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है और पॉल्यूशन और हेल्थ का सीधा सीधा रिलेशन है। हमने अभी हम जो दिसंबर 2019 में क्लस्टर ऑफ अनयूजुअल निमोनिया हुआ वुहान में, वो सीधा सीधा हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड था एंड वाज ट्रेस्ड टू ह्यूनान सी फूड मार्केट. The market was quickly shut down. However, COVID-19 spread across almost every country in the world in the ensuing months. मतलब इन आइसोलेशन कोई नहीं है। कहीं पर लाइफ स्टाइल अगर कहीं गड़बड़ है तो वो पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। Although the seafood market has not been substantiated as the origin of COVID-19, the pandemic has prompted demands for immediate and comprehensive restrictions on the consumption and trading of wild animals. जैसा कि विवेक कुमार राव भी कह रहे थे कि जो इंजेक्शन लगाते हैं जैसे दूध वगैरह के लिए ज्यादा मिल्क दें, तो ये सब लीचिंग होती है, स्पिल ओवर होते हैं, वो सब इफेक्ट हमारे लार्ज कम्युनिटी में पड़ते हैं। उस मुनाफा मतलब असली जो एक हमारा मनी वाला जो फैक्टर है, परितोष त्यागी सर भी कह रहे थे, नफा नुकसान मुनाफाखोरी, ये सब जो चीजें हैं ये पॉल्यूशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं मुनाफाखोरी में, और उसकी वजह से हम इन चीजों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जो कि आगे कई सालों तक हमारी जनरेशन को इफेक्ट करने वाली है। Bans on the trade and consumption of wild animals have since been enacted in several Asian countries and regions, and notably in China and Vietnam also. ये सारी डिसीजेज जो है जूनोटिक डिसीजेस कहलाती हैं, एंड जूनोटिक डिसीज आर डिसीजेज दैट नॉर्मली एग्जिस्ट इन वर्टिब्रेट्स बट कैन जंप टू इन्फेक्ट humans during spillover events. Zoonotic spillover has been documented as originating from various domesticated and non-domesticated wild animals. तो वाइल्ड एनिमल्स में इतने सारे वायरस होते हैं, आपके चमगादड़ में इतने वायरस होते हैं, लेकिन चमगादड़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हमारी रिसर्च ये होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या इम्यून सिस्टम है इन जानवरों में कि जो उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता लेकिन ह्यूमंस को पड़ जाता है। के अग्रवाल जी भी कहा करते थे कि चमगादड़ पे अगर वो वायरस था तो वो चमगादड़ पे इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल रहा था। इस चीज की मेडिकल साइंटिस्ट वगैरह जो भी है वो इसका रिसर्च करना चाहिए, और वो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ह्यूमंस में भी कोशिश करनी चाहिए। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन कैन बी एयरबोर्न, वेक्टर-बोर्न, थ्रू फूड और थ्रू डोज, क्लोज और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ह्यूमंस विद एनिमल्स और दियर ब्लड, फीसेस और सलीवा। अब सेकंड चीज, चलिए कोरोना का हो गया, पॉल्यूशन एंड हेल्थ का क्योंकि सब्जेक्ट है। वाइल्ड फायर्स, कनाडा में बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स होती हैं। वाइल्ड फायर्स emit many carcinogenic pollutants that contaminate air, water, terrestrial and indoor environments. However, little is known about the relationship between exposure to wildfire and cancer risk. लेकिन जहां जहां वाइल्ड फायर हुई है वहां कैंसर बढ़ा है। We aim to assess the associations between residential exposure to wildfires and the incidence of several cancer outcomes. इसमें लंग कैंसर भी है, ब्रेन कैंसर भी है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा है एंड ल्यूकेमिया भी है, और ये सब कनाडा में पाया गया है। जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है, दैट इज एन अपडेट टू द लांसेट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ, रिवील्स that there were 9 million deaths attributable to pollution in 2019. यानी 6 में से 1 आदमी पॉल्यूशन की वजह से दुनिया में मर रहा है। ये बड़ी सीरियस बात है। इंक्रीज इन डेथ फ्रॉम मॉडर्न टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल एम्बिएंट एयर एंड टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूशन, overshadow progress made in reducing pollution deaths associated with extreme poverty.
एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से पहले कहते थे कि पॉल्यूशन उन पे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. Pollution remains the world's largest environmental risk factor for disease and premature death, especially affecting low and middle income countries. Air pollution accounts for nearly 75% of the 9 million deaths. More than 1.8 million deaths are caused by toxic chemical pollution, including lead. लेड के बारे में जैसा अनिल कुमार साहब ने बताया था कि आईपीसीसी रिपोर्ट में लेड पे जोर दिया गया है, and an increase of 66% since 2000. With a few notable exceptions, little has been done to deal with this public health crisis. Pollution was responsible. It is the still largest existential threat to human and planetary health and jeopardizes the sustainability of modern society. Preventing pollution can also slow climate change, achieving a double benefit for planetary health. And this report calls for a massive, rapid transition away from all fossil fuels to clean, renewable energy. 2017 में जो Lancet Commission on Pollution and Health जो डाटा था from 2015 ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी से, उसमें ये पाया गया था कि पॉल्यूशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन एस्टिमेटेड 16% ऑफ ऑल डेथ्स ग्लोबली. और जो नई रिपोर्ट है दैट प्रोवाइड्स अपडेटेड एस्टिमेट्स फॉर द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंटली अवेलेबल 2019 डाटा एंड मेथोडोलॉजिकल अपडेट्स एज वेल एज असेसमेंट ऑफ ट्रेंड्स सिंस 2000. So the decline in deaths from traditional pollution is most evident in Africa. जैसे कि द्वारका नाथ जी कह रहे थे ना कि रीजनल उस पे ज्यादा जोर दिया गया है कि अफ्रीका में क्या है और वहां क्या है, जो नई रिपोर्ट आई है. तो अफ्रीका में the decline in deaths from traditional pollution in 2000 is most evident in Africa. This can be explained by improvements in water supply and sanitation, antibiotics and treatment, and cleaner fuels. However, this mortality decrease has been offset by a substantial increase in deaths from exposure to industrial pollution, such as ambient air pollution, lead pollution, and other forms of chemical pollution across all regions over the past 20 years. This is particularly evident in Southeast Asia, where rising levels of industrial pollution are combined with aging population and increasing numbers of people exposed. So, जो excess deaths due to pollution have led to economic losses also, totaling US $4.6 trillion in 2019, equating to 6.2% of global economic output. The study also notes pollution's deep inequity, with 92% of pollution-related deaths and the greatest burden of pollution's economic losses occurring in low-income and middle-income countries. तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, pollution, climate change, biodiversity are closely linked. Successful control of these conjoint threats require a globally supported formal science policy interface to inform intervention, influence research, and guide funding. Pollution has typically been viewed as a local issue to be addressed through sub-national and national regulation, or occasionally with regional policy in higher income regions. But however, it is clear that pollution is a planetary threat and that its drivers, dispersions, and health impacts transcend local boundaries and demand a global response. And global action on all major modern pollutants is needed. That's all that I wanted. Thank you आपने किया. बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, रिपोर्ट तो देखिए इनके अपने व्यूज हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज की जो डिस्कशंस पॉइंट्स पे बेस्ड है,
बट मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई भी एयर पोल्यूशन जो मेजर है, अगर हम 3 pronged स्ट्रेटजी ही लेके चले अगर, तो दैट विल बी आवर मोस्टली आई थिंक ऑल प्रोग्राम्स जो हैं. फर्स्ट इज द डेफिनेटली फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ग्रीन फ्यूल बेस्ड सॉल्यूशंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट है जितना मैक्सिमम हो सके. सेकंड इज दी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और जीरो वेस्ट सोल्यूशन, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट. थर्ड इज मैसिव ट्री प्लांटेशन. अगर हम 3 ये चीजों को ये हम कर लेते हैं 3 pronged स्ट्रेटजी, तो आई थिंक हमें ये इस तरह की रिपोर्ट से, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सर्वे कह रहे थे कि जो ओवरऑल फोकस जो है रहना चाहिए. और अभी हमारे पास 5-7 मिनट हैं, तो मैं अगर वरुण है और आई थिंक अंकित वाज आल्सो, अंकित इज नॉट देयर. तो वरुण, यू वांट टू से एनीथिंग? सर मैं बस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा. जैसे आप 3 pronged स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, थोड़ा सा जैसे हम लोग चाहे सर्विस सेक्टर की बात करें या गुड्स सेक्टर की बात करें, एक लाइफ साइकिल अप्रोच भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे किस सेक्टर में या किस प्रोडक्शन में कहाँ पर मैक्सिमम पॉल्यूशन हो रहा है, ताकि फिर उसको टारगेट करके कम करने का, जैसे एनवायरमेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, उस सेक्टर को फिर फोकस कर सकते हैं. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वरुण. Okay, thank you. Ira, you want to say, because the lot of we have in the national regulations or state regulations, but even then we are not because of these regulations, even the on the legal point of view से जो legally जो law है या जो भी regulations है उससे control होने में pollution का this is some challenges also. So anything you want to in the legal point of view से कुछ कहना चाहेंगे Ira? Yes sir, thank you so much. सर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब एक्चुअली क्या है, एनफोर्समेंट इज वेरी बैड. एंड जब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा और सब इंडस्ट्रीज को, हर सिटीजन्स को ये नहीं लगेगा कि ये पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम एंड वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस पोल्यूशन एंड इट इज हैम्परिंग अस ओनली, तब तक सर इसका लॉज, गाइडलाइंस, पॉलिसीज तो बहुत बने हुए हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो पाएगा. So there has to be strict implementation and enforcement, which is lacking a lot. आपने भी जैसे बोला था कि इंडस्ट्रीज को लगता है कि ये बर्डन है, पोल्यूशन की गाइडलाइंस को फॉलो करना एक बर्डन है. ये सब जगह ही है सर. इनफैक्ट रिसेंटली आई हैड अ चांस टू विजिट वन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आई डोंट वांट टू नेम इट, और वहाँ पे सर आई वेंट ओनली फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस वेस्ट मैनेजमेंट ओनली. सर वहाँ अवेयरनेस ही नहीं है. मतलब जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज में अवेयरनेस एक ऑफिसर को होनी चाहिए, कमिश्नर्स को होनी चाहिए, वो ही नहीं है. उनको डिफरेंस ही नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट दे आर जनरेटिंग एंड हाउ दे आर सपोज्ड टू मैनेज इट एंड हाउ दे आर सपोज्ड टू डिस्पोज ऑफ इट. सो अवेयरनेस इज आल्सो वेरी बिग इशू. और जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटीज में, जो वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कौन सा वेस्ट किस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. सो इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ सर अवेयरनेस इज अ वेरी बिग इशू. आपके अथॉरिटीज में ही अवेयरनेस नहीं होगी तो पब्लिक एट लार्ज को तो डिफरेंस वैसे ही नहीं समझ में आएगा. सो आई थिंक ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हर जगह ही होनी चाहिए, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन एंड द अवेयरनेस पार्ट. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक यही है कि, और हमें एक मेरा सजेशन है कि अगर जैसे, क्योंकि ना ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि किसी तरीके का हमें सब्सिडी मिलता है या कोई पनिशमेंट, पेनल्टी लगती है, तो हम उस लॉ को अच्छे से फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल जब मास्क के लिए 2000 रुपीज का फाइन हो गया तो एवरीबडी स्टार्टेड वेयरिंग मास्क. सो सिमिलरली अगर हम अपनी टैक्स पॉलिसीज में कोई एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा है, उसको हम कोई सब्सिडी दें, कोई टैक्स रिबेट दें, इवन एट द इंडिविजुअल लेवल, या फिर पेनल्टीज हम बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दें जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इम्प्लीमेंटेशन एक अच्छे से फॉलो हो पाएगा. This is my but suggestion. I think NGT and all they're doing that, but even then जो impact जो massive level पर नहीं हो रहा है. Sir, NGT and Honorable Supreme Court, they have passed lot of orders. They have passed time and again, रोज एक नया order आता है. But then the problem comes कि वो जो orders हैं, उसका implementation falls on the authorities itself.
देन वही प्रॉब्लम है, अथॉरिटीज को ही अवेयरनेस नहीं है, तो फिर वो अथॉरिटीज इम्प्लीमेंट क्या करेंगी प्रॉपर्ली? बट अगर हम सिटीजन्स के ग्राउंड लेवल पे बात करें तो आई थिंक पेनल्टी एंड सम काइंड ऑफ टैक्स रिबेट विल बी एन इंसेंटिव टू द सिटीजन्स एट लार्ज, क्योंकि सिटीजन्स आर द वन हु आर पेइंग टैक्स, तो उनके लिए एक इंसेंटिव हो जाएगा टू फॉलो द एनवायरनमेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। जी, तो डेफिनेटली हम इस पे आज की रिपोर्ट पे वी हैव डिस्कस दैट बिफोर क्लोजिंग आवर सेशन। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट संडे वी हैव दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो 5 जून को ही हो रहा है, तो हमारी ये राउंड टेबल वी वांट टू जस्ट फोकस ऑन दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम नेक्स्ट संडे का। और उस पे मैं चाहूंगा कि अवर फोकस ऑन दी वी वांट टू फोकस ऑन द नेटिव ट्री प्लांटेशन, बिकॉज मानसून भी आ रहा है बहुत से। सो अगर आप लोग कोई सजेशंस हैं और कुछ है देना चाहें जो नेक्स्ट संडे का टॉपिक जो है ऑन द बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द वन आपका वन वर्ल्ड जो है दैट वन अर्थ दैट वी हैव। सो द्वारका सर कुछ बताएं इसमें हम क्या नेक्स्ट संडे वी वांट टू हैव विद एनवायरनमेंट डे ऑन अवर राउंड टेबल दैट वे। नहीं, not on the environment day, based on today's discussion only. You know, Lancet or any other foreign agencies do conduct such studies, but our own agencies in India should focus on coming up with detailed reports like that of this study, because they do at a macro level, they do at a continent level. How far the statistical correlations will be correct and relevant for Indian context, this is questionable. Every report we are questioning, including that of COVID report, COVID death report that they have globally estimated. Many countries, including India, has protested. For this, this kind of study should be a biannual exercise or so that, you know, whether it is ICMR or MCA or any appropriate organization or Ministry of Health and Family Welfare, they should come up with, they might be having a report on waterborne diseases. Yeah. They are having a report on tuberculosis. They are having a report on cancer. In the same way, only thing, this kind of Indian-based, Indian state statistics-based study should be done by an Indian organization with an Indian perspective. That will give more insight and more understanding of the problem, and also the veracity of the report that is claimed in various international agencies. And we cannot deny and should not ignore the fact international reports at times or more often are biased. Yeah, that is also true. But definitely, I think the government of Ministry of Environment, Forest and Climate Change is doing the study on the pollution and health. I don't know how long it's going to take, but they have already started about, I think, 2 years back. So they're going to, I think, maybe near future going to come with the really the impact on the health and the death of the pollution. The study is going on Ministry of Environment, Forest. So I think that was the SMA I was telling about that कि हम environment day पे ही we want to focus on the local issue, that we will more focus on the native tree plantation and things like. So हमारी next round table 1 hour going to be on the same time 12 to 1 on 5th June next Sunday on the particularly theme on the World Environment Day. तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट संडे को बेस्ड ऑन द थीम एंड फोकस ऑन द नेटिव ट्री प्लांटेशन, ठीक रहेगा सर? आपके म्यूट है सर, आपका ठीक है विवेक जी, आप म्यूट। अच्छा, बात शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे नीरज त्यागी जी बोल रहे थे कि एवरी प्लांट हैज अ बेनिफिट. We should एक तो क्या है, we have to make it region wise, because what grows in North India is not necessarily will grow in South India. अब South India में coconut trees होते हैं, but in South India we can recommend coconut trees, but we can't recommend coconut trees for North India. So we must have a way where we can recommend people what to plant region wise also. Is very important.
I think, sir, Partho sir, Tyagi sir, last CPCB has come out long back, the pollution abatement tree and things like. So next May we can take up the native and the pollution abatement tree, focus on the world environment. Very well. The CPCB also has come out with this one report, one booklet on the kind of thing on the pollution abatement trees. That so I think we'll take up this next Sunday. और आज जो हमें सभी एक्सपर्ट का पर्टिकुलरली पार्थो त्यागी जी, डॉक्टर द्वारकानाथ खंडेलवाल जी, नीरज जी, विवेक जी एंड जो हमारे सभी एक्सपर्ट्स आज जो है, जो सब लोगों ने जो आज अपने व्यू एक्सप्रेस किए, और डेफिनेटली हमारा आवर फोकस शुड बी दो दीज आर दी ग्लोबल रिपोर्ट और इस तरह का, बट लोकल जो है जो पोल्यूशंस के जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो जब तक ग्राउंड पे नहीं आएंगे और कंप्लीट एनवायरमेंट मैनेजमेंट फोकस नहीं होगा, जैसा त्यागी सर ने कह रहे थे, तब तक हम ये इसी तरह की रिपोर्ट्स आती रहेंगी और हम जो है उसी पोल्यूशन लेवल्स में और जो पर्टिकुलरली जो रोड पे जो एक्सपोजर जो है जो नॉन मोटराइज्ड लोग फोकस कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। तो आई थिंक सबको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि इस तरह के लोकल जो है सोर्सेज पे कंट्रोल करें और एक कंप्लीट पोल्यूशन कंट्रोल और एनवायरमेंट मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए। द्वारका सर, यू वांट टू वन सजेशन, if no other expert is there, I wish to suggest for next week Dr. Ravi Kumar. He is working in an institute called FANA for the regional and local habitations. Sir, that institute is there in Bangalore. I can request him to be the resource person or speaker. बिल्कुल सर, make some 10 to 15 minutes presentation. Yes, sir, I will introduce him to Dr. Vivek Kumar also, so that since they are in Bangalore, they can be in touch with each other also. जी। तो सर इसको उनसे बात कर लीजिए. I think that we can come a little better जो है, because we want to focus on the theme of the world environment. ठीक है, okay. ठीक है सर, thank you sir.